Okay, so yeah, the basic idea is that a person can either be a, one who wants a referral. He could be someone who can provide a referral, or he can be both of those two categories, right? So he'll sign up on this website. He'll provide his handles for CodeChef, CodeForces, GitHub, @coder, LeetCode, right? And we'll make sure. So the problem is that a person would always want, he might even want, right, to maybe like imitate someone, right? So he'll say ki theek hai, I'm tourist maybe. So we have to avoid such scenarios. So for that we'll have to have an automated check, right, that the website is able to check that whatever he is adding is right or not. Now in order to check that, we can do what this TLE bot already does. So we can ask that person to submit a problem with a compilation error, right, in maybe like 1 minute, or one in like 2-3 minutes. As soon as he does that, then we can be sure that okay, this is the right person and this handle actually belongs to him, right? And then we can assign him that handle. Now then there would be a leaderboard, right? If I go over here, yeah, so sign up and log in for both job searches and people willing to refer them. Then add and authenticate handles from various platforms and from the Discord server. Because another thing is that if I look over here, so the open source thing is actually kind of dead over here. I'll not say dead, but yeah, people are not talking much about it over here. It's kind of a CP server now. So if I look over here, then there are people who are contributing immensely, right? So I haven't seen a lot of messages. So okay, see, like he's helping with this, right? And Ketan solved some other doubt. So these are the people who are actually helping. Say Ketan solved another doubt over here. Then he closed his problem on his own. I don't know why, but yeah. Okay, so critic cell solved another doubt, and so on and so forth, right? So everyone's solving some or the other doubt, right? So that's what we are gonna do. So we are gonna pull up their okay, yeah. So we are gonna pull up their Discord handles, and based on the help they're providing to others, we can also reward them, right? So basically there would be a leaderboard that would consist of your open source contribution, your CP handles, the way you are performing over there, also the help you are providing to others via Discord, right? So that would put you somewhere on the leaderboard and everyone would be able to see it, right? So this might be a bit of a push to people so as to help others and to be active on these different platforms. And because we are providing all of these three things, then this would be something that would encourage people to help, to contribute to open source, as well as to do that CP thing, right? So that CP versus deb, CP chutia hoti hai, deb chutia hoti hai, that thing would kind of go away, right? So everything has its own importance, and I think that it's time we should realize that. Hence I've mentioned this. Then you can actually reach out to people. So the profile actually would tell you that with that if a person works in X company. Now I have to finalize on the way that we'll be able to verify that. One of the way could be that we can scrape LinkedIn, and then we can check the recent recruiter for that of that person, or the recent company he's working at. So that could be one of the ways. But anyway, business logic would be talked of later, right? So the people can also check your profile and can provide you referrals, and the person would have a choice, right? So let's say like 10 people reach out to me and I only want to provide maybe like 5 referrals. So I'll just check who has the best profile, right? And whosoever would be having the best profile, I'll provide them referrals. Now I do have friends who are probably in all of the companies that you have heard of, right? So providing referrals shouldn't be a big deal for me. I would be able to provide it. Obviously the required thing is that you should have good profile, right? And show Discord server, forum post. So yeah, other thing I was thinking is that I'm not sure. Hikago, do you have idea कितने post होंगे यहाँ पे? Did bot do any such sort of that calculation? कितने post होंगे? कुछ idea है? हाँ सर, पता लगा सकते हैं कितने पोस्ट है, नहीं, थर्ड वो में वो साइज तो होता है। वो I know, पता लगा सकते, that is something known. What I'm asking is, we already know कितने posts हैं? कुछ rough idea है? नहीं सर, ऑफ आइडिया नहीं है, आई थिंक 800 के बारी होगा। ठीक है, तो 1000 मान के चलते हैं, रफ आइडिया, ठीक है। बहुत डाउट सॉल्व किए हैं यार, पहले तो मैं पूरे पूरे दिन बैठ के करता रहता था, ठीक है। तो सो ओवर हियर वी ऑलमोस्ट हैव 1000 क्वेश्चंस, गिव और टेक, राइट। नाउ द अबे माइक ऑफ कर लिया भाई, क्या सीन है ये? ओके, सो जी जी। हाँ, बता दो तेरे को। तो द आइडिया इज दैट वी ऑलरेडी हैव अराउंड 1000 posts over here, right? And these posts are actually pretty helpful, because if there's a tough problem, then I'm sure a lot of people have contributed to that.
let's take this example for particular. Now a person posted this, right? And then he posted what he coded for, and then there's a detailed discussion on that, right? So see, I'm pretty sure that you won't get such explanation anywhere, right? So a person is where a person is actually explaining this in detail, right? Now the problem is this entire explanation or this entire effort is limited to this chat. So whosoever is not there in this server cannot use it, right? So it's obvious, like same problem पे काफी लोगों को doubts आएंगे. So there could be like X number of people who are having doubts on this problem. That is the problem's name is unknown. That's weird. नहीं कुछ और होगा problem's name. Okay, yeah, G hits different. Cool. So this hits different problem. People would be having doubts over here, but they cannot utilize this entire explanation or this rich material. So what we can do is similar to, okay, yeah, similar to Stack Overflow, wherein you can put a problem and then they'll give you different perspective of people and the possible solution as well. KitKai, I don't know how to tell him. Okay, just wait a second. Okay. Anyway, so like similar to Stack Overflow, that wherein a lot of people have actually answered a problem, and you can go through all of those comments and all of those solutions so as to understand the problem in a bit better detail, or so as to understand the solution in a much more comprehensive fashion, right? So we already have the data. Now these are 1,000 problems, and by 1,000 problems, like there would be more than maybe like 10,000. Yeah, there would be more like 10,000 comments by different people and different perspective. That means, right? So this is a really really rich content. I want this to be given out to all the people, right? So we can utilize these forums over here, and they would be published. Okay, yeah. So they would be published over in this website. So and there would be a good search bar that person can use to search. So he can say that, okay, I want to check this problem, and if that problem would already be listed in one of the forums, that would pop up. Else the person can actually post the doubt. And this is not only limited to CP problems. We would definitely extend it to like development problems as well. But we already have we already have Stack Overflow for that, so the utility might be minimal, right? So it might not be that useful, but yeah, you're getting my point. I hope, right? So that is this point. That is okay. This is done. Yeah. So this can be the Stack Overflow for DSA or competitive programming, and then you can also ask the doubt. And as soon as you ask the doubt, so the thing is that once you have asked the doubt, then it's always easier for people to actually comment on Discord itself, because everyone uses Discord, right? Vis-a-vis, a person might not use this website that much, so a person can comment over here and it automatically would appear on the website as well. So that syncing needs to be done. So his doubt obviously would be answered based on the kind of help you provide to others, you would be awarded. Yeah, that's pretty much it. So yeah, this is what I'm thinking about. Any suggestions, or what do you think? No, अभी you are stupid. माइक ऑन करियो अपना. हाँ हाँ. अरे यार देख क्या कर रहे हैं. बेसिकली एक वेबसाइट बना रहे हैं, राइट? हाँ जहाँ जहाँ पे लोग अपने कंट्रीब्यूशन डाल पाएंगे. सो दे वुड बी एबल टू लिस्ट देयर competitive प्रोग्रामिंग हैंडल्स, मतलब कोड शेफ, कोड फोर्सेस, एट कोड, लीड कोड वगैरह वगैरह. And also they'll be able to attach their GitHub link over there, right? So ठीक एक है consistency पता लगेगी, because there could be people who want to do both, right? They might want to do competitive programming as well as they might want to contribute to open source, right? So based on both of them, their profile would be listed over here. So we'll be able to see कि ये बंदा DSA ज़्यादा कर रहा है, ये बंदा dev ज़्यादा कर रहा है, या ये बंदा दोनों कर रहा है. Make sense? And समझ then गया I would ask my friends who are already there in the industry to sign up for this website, right? And they can actually choose, right? So a lot of people over here would actually be requiring referrals, and cold mailing is a bitch. Basically what I mean is कि तुम मतलब वो बोलोगे LinkedIn पे referral दे दो, मोस्टली लोग देते नहीं है, रिप्लाई नहीं करते, right? तो that problem could be solved, because if you're asking someone for a referral, he will be मतलब वो भी बंदा इसी पोर्टल पे होगा, he'll be able to see how capable you are, right? या And then he'll be able to give you a referral as well. So it solves a lot of problems, right? wait who is this
yeah, so that's the entire idea. And other than that, so what I was saying is that we already have a lot of rich content over here in DSSCP doubts. It's like more than 1,000 questions maybe. So with all of these problems, we do have really rich content which I think should be exposed to rest of the people, even to those who are not using the Discord server per se. Because कितने लोग होंगे Discord पे? I think roughly maybe like 1,000 2,000 people. Check करिए अभी कितने लोग हैं Discord पे. So there would be around Wait, देखता हूँ. 1,500 2,000 people. That's my rough estimate, right? So there are a lot and lot of people who don't use Discord. I believe they also they should also get the benefit, right, of whatever we have already, resolved over here, or whatever problems we have already resolved. So yeah, that's the idea, to make a sub platform into that platform which can contain all of this information. अब ready to check कितने लोग हैं Discord पे? हाँ वही देख रहा हूँ. Well done. कम लग रहे हैं यहाँ पे तो. कितने कम हो गए भाई? ये कैसे हो गया? ये बहुत ही कम हो गए, या फिर काफी सारे लोग हैं जिनको रोल्स नहीं है एक भी. हाँ वो हो सकता है ब्रो, ऐसे डराओ मत ब्रो मुझे. ठीक है, देखो यहाँ पे स्क्रॉल करो, रोल्स में देखो 300-350 ऐसे, इन सबको ऐड करके लाइक अराउंड 600 के आसपास हो जाएंगे मे बी. 1666. And where did you check, Badal? भाई वहाँ जाना ना, सेटिंग में नंबर पे जाओ, मिल जाएगा तुमको. कोड अच्छा हो गया भाई, तुम पे मान लिया मैंने, तुमने जो बोला मैंने मान लिया. 1666 members are there, right? This सर्वर के बाद- सेटिंग में जाकर मेंबर्स में आ रहा है पूरा 1666 मेंबर्स. ठीक है, तो इतने हमारे पास मेंबर्स पड़े हुए हैं ना. दुनिया बहुत बड़ी है. It's not just 1666 people, right? So let's expose all of this gyan to them also. So that's the entire idea. I hope this makes sense, right? So now I want Okay. your perspective. So today we want to decide that what tech stack would be we would be using. So I think we already did a small poll where we check कि हमें मतलब React use करना है, Angular use करना है, and people overwhelmingly supported React. So I think we are gonna go with React. But एक बार बोलना तो बोल लो, किसी को Angular करना है इधर? नहीं. पूछा था ऐसे किसी ने? है? अच्छा, ठीक है. Okay, cool. So React कर रहे हैं फिर सारे के सारे, ठीक है. And the other thing is JavaScript or TypeScript. टाइपस्क्रिप्ट करते हैं. I also want to go with मेरे साथ. TypeScript. Guys, can you please type over here? टाइपस्क्रिप्ट पे एक फायदा होगा कि लाइक एरर कम आएंगे कुछ. Exactly. And थोड़ा documented भी रहता है कोड. You will also learn TS. हाँ. हाँ. हाँ, और इतना मतलब अलग नहीं है जावास्क्रिप्ट से. Guys, actually अगर सीवीपी किया है ना तो फिर तुम्हें मजा ही आएगा टाइपस्क्रिप्ट में. हाँ, तो जैसे तू JS डेवलपर ही है ना भाई. मैं पैसे नहीं मैं- चाहिए, तो पहले बता दी, बाद में बोले पैसे चाहिए. We can put JavaScript in TypeScript but not vice versa. Yep. कोई भी मुझे सीखना ही होगा दोनों. It's a superset of JS that's करते से. Yep. Okay, so guys, someone is trying to speak something. JS आता है तो वेल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तेरे को. प्लेलिस्ट है, मैं दे देगा. भेजूंगा. मेरे ख्याल से तो पढ़ना भी नहीं होगा कुछ उसमें, बस हाँ डेटा टाइप डिफाइन करना होता है. एग्जैक्टली. मेरे को 2 दिन लगे थे टाइपस्क्रिप्ट से फैमिलियर होने में. बाकी फिर उसके बाद सीखते जाओ आराम से, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं. जो चीज समझ नहीं आ रही गूगल कर लो. और ऐसा है पता है, मतलब कि जब वो करते हैं ना डेवलपमेंट, जब चल रहा होता है प्रोजेक्ट, तब वो दिक्कत देता भी नहीं है. अगर हाँ. तुम सिंपल जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो वो दिक्कत नहीं देगा. जब तुम बिल्ड करने जाओगे ना प्रोडक्शन के लिए, तब वो बोलेगा कि ये टाइप मिसिंग है, ये टाइप मिसिंग है, तब वो दिक्कत देता है बस. Right. अच्छी आदत सी बना देता है ये वैसे. अरे सही है हाँ. रेंगोकू. सो द पॉइंट ओवर हियर इज दैट लेट्स से दे आर कितने लोग हैं इधर? 1 2 3 4 5 6, राइट. 6 चौके 24, मतलब 22 लोग हैं इधर टोटल, ठीक है. सो amongst this 22 people, I think maybe like 4-5 people, or maybe at max like 6-7 people would know things in detail, and most of us are not that comfy with the dev. Chetan, your mic is mute. Sorry, not your mic, but your voice would be Chetan. Speaker ही बोल देता है. अच्छा भैया, मेरे को ना जाना है तो एक बारी मेरे को टैग करके लिख देना जो भी इन द एंड डिसाइड हो. मेरे को लाइक या तो बैकएंड आवाज कट गई भाई तेरी.
सही में कट गई। हाँ बोल। अब मैं ये कह रहा हूँ मेरे को ना जाना है अभी 1 मिनट में, तो फिर मेरे को या तो बैक एंड या फ्रंट एंड में कहीं भी ले लेना, और मेरे को एक बार मैसेज टैग करके लिख देना मैसेज में कि तू क्या गायब हुआ। तो नहीं होएगा ठीक ना? है, क्या गायब डिसाइड तो नहीं हुआ। होएगा ना वापस? नहीं नहीं। ठीक है, cool. क्या, बस थोड़ा पेस स्लो रहेगा। हाँ कोई दिक्कत, अरे यार, एंड वन मोर थिंग, सुन जा पहले। सो वन मोर थिंग आई वांट टू से इज दैट ऐसा मत करना दैट यू टेक अ लॉट ऑफ बर्डन एंड देन यू स्टार्ट कोडिंग इट अप। इट्स नॉट अ प्रायोरिटी, you just want to make a platform that is like you know that's like a support to the community, right? So what I'll say is do small PR, small changes, bilkul minimal changes, such changes that everyone can understand. So it could be like Hikaku is doing it, yeah, Suraj is doing it, yeah, Prerik Gada is doing it. I don't know, like you guys could be master of your field, or maybe Kid Guy. I don't even know how much you know, right? So what I'll say is do small PR so that others can also understand, right? And if you guys feel that you are really comfortable with tech, then when others are making PRs, then teach them कि भाई तुम क्या गलत कर रहे हो. Now this would work both ways, right? And if you have any sort of doubt in this particular methodology that it helps you grow, then ask Badal Arya. Badal Arya, does this helping other helps or not? हाँ भाई बादल. बादल रिप्लाई नहीं कर रहा. यस ब्रो. अभी सही है. अरे हेल्पिंग हेल्प्स ना, तूने देख लिया ना हेल्प करके सबको. अरे बहुत ज्यादा भी। यार तो या हेल्पिंग एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट. सो you can solve hard. CP Dev is nuts. I actually feel the same, Pratik. So the point is, it's just about being confident in something, right? I also feel that I can learn things faster. I've already done that with a lot of other things, but it's about being confident. So I'm not confident in my front end skills or stuff, right? So once I'll do it, I might get confident. So in this time when you are gonna like when we are gonna develop the things, what I expect you guys to do, that everyone, irrespective of your experience level, make small PRs which can be understood by almost everyone. I don't want you to make like a PR that contains maybe like 5,000 lines, right? Or maybe like even 1,000 lines. Don't make such PRs that don't feel motivated to even read or go through. Make small PRs that people can understand. Make PRs which are pretty detailed, which have a good documentation, so that the code is also neat, it's clean, it's modular, and on top of that, yeah, Suraj, I'll come back to that definitely. Yeah, so make PRs that are small, neat, and everyone can understand, so that they can also grow. And on the other hand, when other people are making PRs, so it's quite probable that we are making it like we are doing dev for the first time, or we are doing open source for the first time. So our PR is not good, our code is not good, it lacks details or anything of that sorts. Then it becomes your responsibility to teach the other person. This, okay, PR is actually a pull request. So whenever you want to like commit some changes into the repo, right? सो यूल हैव टू रेज अ पुल रिक्वेस्ट. सो तू बोलेगा भाई मेरे को एक फाइल ऐड करनी है, ऐसा नहीं, तू खुद नहीं ऐड कर सकता वो फाइल. सो यूल हैव टू रेज अ PR, पीपल वुड रिव्यू इट, एंड देन इट वुड गेट मर्ज्ड इनटू द फाइनल रेपो, राइट? So that's what a PR is. So see, Abhishek asked what is a PR, right? Abhishek is already good in like he's already doing good in DSA-CP. So now you guys understand that just because a person is doing good in DSA or CP doesn't really mean that he knows dev. And I think that's pretty obvious. So you guys have to help each other, and it actually helps a lot, because when you are helping someone, your own concept becomes better, and it actually helps a lot in interviews. That is something I really believe in. So I think with this approach, all of us would be able to grow. Can someone let newbies know what Yeah. needs to be learned when? Hikaru, yeah. So, acha, who all over here in this current chat currently have good hands with open source, or with TypeScript or JavaScript or React or Node.js or any tech stack that you feel might be used over here? ओपन ओपन सोर्स तो नहीं, बट मंस्टैक और टाइपस्क्रिप्ट के साथ अच्छा। नाम लिख उधर अपना, इसमें लिख. रुक जा, मेरे को मैसेज यहाँ पे पूछना ठीक है। है. You all are okay. अब है मान ठीक है। Cool. अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है भाई, तू जा, कोई ठीक दिक्कत है, नहीं है. बाय बाय। बाय. अच्छा, मुझे लगा सेवरल पीपल नाम है किसी का. ओ
हिकाकू भाई, तेरा नाम तो पहले आना चाहिए था। हिकाकू हैज लेफ्ट द चैट। हाँ सर, हाँ सर, लिख रहा हूँ। अरे बिजी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे पूछ रहा हूँ। रेंगोकू, सो पानी पी लिया हो तो भाई बात ऐसी है कि आई एम जस्ट आस्किंग who all are actually comfortable with the tech stack and stuff, so that they can be the mentors over here, and other people, you know, other people can ask for guidance from these people. So if you are comfortable with some tech stack, or if you have been active in open source, so just you can mention that over here. तो हर्ष भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद नहीं बन रहा तो क्या दिक्कत है, चल करते हैं थोड़ा। ये मी टू। जा भाई हर्ष, लिंक्डइन पोस्ट डाल दे इसी बात पे एक। एंड गाइस जस्ट वांट टू से समथिंग ओवर हियर, आई एम नॉट श्योर, मेरे को ऑफ टॉपिक भी बोलना चाहिए था वैसे, बट एनीवे यू गाइस आर ओवर हियर, सो आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू ऑल गाइस। अरे भाई एक मिनट। Okay, so what I'm saying is that whenever you accomplish something, make sure to post that on LinkedIn, right? Now, people might have varied views on this, but it's not even just about CP. If you're making something, if you're developing something, just don't feel shy and post that. The reason being that headhunters are always looking for engineers, right? And you applying to a company versus a headhunter actually looking out for you makes a great difference. Most of the times, if you apply to a company, your resume won't get shortlisted. Now, there are multiple reasons to that. I'm not going into that. So, but when a headhunter or a recruiter reaches out to you, then your odds of making at least to the interviews are far more high, right? And a headhunter would only be able to reach out to you if you are active on LinkedIn, right? At least you are posting things you have been doing and all of that stuff. If you're doing that, only then a headhunter would come to you. So it actually matters a lot. If you're looking for a job, then please always do it. Don't miss out chances like these. हर्ष भाई बन जाएगा वैसे तो अभी 5 स्टार भी कुछ टाइम में। कितने कॉन्टेस्ट दे रखे हैं तूने? सर मैंने अभी तो एक सेकंड देखो, 14 हो गए सर अभी तक तो। प्रोफाइल क्या तेरी? तो मेरी प्रोफाइल है, नाम वैसे जीवी है, AJS जे जे AS के AS? के ए, मैं चैट में लिख देता हाँ भाई, हूँ। ऐसे नाम कौन रखता है भाई कि कीबोर्ड टाइप कर देगा उल्टा सीधा कुछ भी जो बन गया ठीक है। ये सर नाइस, लगा ही था मेरे को आसपास के लेटर से। ठीक है, नाइस नाइस ब्रो। सिद्धू मूसे वाला, ओके। यार स्टैगनेंट सी हो गई है ग्रोथ भाई तेरी थोड़ी सी। ये सर आज बढ़िया है। आज मतलब अभी रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट हुई नहीं है ना अभी? नहीं सर अभी तो नहीं, 1900 दिख रही है। कितने किए था आज तूने? आज सर मेरे से डिव 2 के 4 हो गए थे पहले, डिवाइड इनटू ग्रुप वाला भी हो गया। तो इतना बड़ा कोड लिखता है तो यार। ये टेम्पलेट वाला है वैसे तो, बाइनरी सर छोटा सा ही है। हाँ वो तो मेरे को पता है, कोड फिर लिखा है कितना बड़ा। ओके भाई, इसके लिए तो ये सब कुछ क्यों करना पड़ा वैसे? सर पता नहीं, मेरे ना कभी 4 पास हो रहे थे, फिर कभी 3 हो रहे थे, ये बार बार ऐसा हो रहा था, कभी 4 कभी 3 फिर 2 हो रहे थे। भाई फिर ये मैंने चीज़ ठीक नहीं, इसको ठीक कर, इसको ठीक कर कोड, ये गलत है, ऐसे ऐसे नहीं करना। ऐसे क्यों कर रहा हूँ यार? तो गलती 1E12 लगी। पे जो है ना 2 फेल हो रहा था, 1E16 पे 1 फेल हो रहा था, और 1E14 पे सारे पास हो रहे थे। मतलब यस सर। मतलब बाइनरी सर्च लगाना था हम्म ना तो स्टार्ट और एंड करेंगे जो एंड। तेरी अगर 1E12 लगा था तो 2 फेल होते हैं, 1E16 करा तो तो तुम्हारे लॉजिक में दिक्कत है। फैन चल रहा अगर है। वैसा वैसा हो रहा है तो तुम्हारे लॉजिक में दिक्कत है, एंड इट्स जस्ट
being lucky that it worked. अगर तुम्हारा बड़ी रेंज पे अटक रहा है, छोटी रेंज पे चल रहा है, then लॉजिक में दिक्कत है कुछ ना कुछ. You're just being lucky, right? मेरे साथ मैंने 5-6 मिशन ऐसी मारी थी, मतलब 12 पे 4 हो रहे थे, 16 पे 4 हो रहे थे, सेम ऐसे ही। हाँ तो तो भाई एक तू कर ले इसको, ठीक करियो मतलब बाद में, नहीं तो रिस्क इट आउट. I'll check it. मैंने आज देखा नहीं वैसे. DSC का Yes, क्वेश्चन, sir. DSC का क्वेश्चन तो नहीं था, इसे बाइनरी सर्च है ना, सिंपल. बाइनरी सर्च सिंपल था। ठीक, इसको कर लियो शायद पक्का. यस सर। कोई नहीं जॉन, लेट हिम रेज द डाउट. इसको पहले ट्राई करने दे. अगर तेरे को करना होगा तो भी डाउट रेज कर दियो, नो इश्यूज. ओके, नाउ बैक टू द प्रॉब्लम दैट वी वर एट. सॉरी सूरज, इट टुक अ while. So what exactly do you want to understand now about the website, right? Suraj bhai, can you turn in your mic? That would be actually really helpful. हाँ भाई बताओ. You said right, you want to understand more about the website. So what exactly do you want to understand? Yeah, like the main purpose was a profile है ना. तो No, your हर voice is एक not clear. Your voice is not clear. Can you speak again? हाँ, अब आ रही थी आवाज. हाँ भाई बोलो. हाँ, तो हेलो. Yeah, just kind. या अब आ रही है क्या? हाँ भाई आवाज तो आ रही है, but just kind is तो also saying something in between. Just kind, if you're not saying something, so can you mute yourself? Okay. Anyway, सूरज भाई बोलो. या सो आई वाज सेइंग कि जैसे प्रोफाइल रहेगी बंदे की. हम्म प्रोफाइल रहेगी बंदे की, तो वो मतलब जैसे अपन डेटा फैच कर रहे हैं स्कोर हम्म कहीं से भी, कोड फोर्स हम्म से भी, किसी हम्म भी site से, या हम्म फिर इवन गिटहब वाला, राइट. तो हम्म वो तो लाइक ऐसा हो गया कि हर कोई मतलब अपना हर जगह सोशल मीडिया पे भी मेंशन करता है. हम्म So that is something static, right? हम्म So what different we can do is, कि like अपने साइट पे हम्म जैसे दैट इज डिस्कस फोरम, राइट. मतलब हम्म जैसे अपने डिस्कॉर्ड से अपन प्रॉब्लम्स लेंगे, वहां पर डालेंगे. तो उससे उससे उसकी प्रोफाइल बिल्ड हो, दैट वुड बी बेटर, राइट. हम्म. Okay, so the दैट दैट वुड बी point मच. you are missing is that for us, what we are doing is we are combining CP and dev, right? तो यार देख, अभी क्या है कि मार्केट में ऐसा चलता है कि इधर यू कैन बी अ डेव, यू कैन बी अ सीपर, राइट. सीपर मतलब तुम डायरेक्ट प्रोग्रामर हो जाओगे. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हेटरेट बिटवीन द टू. मैं सही से बात बताऊँ, आई हैव नॉट रियली सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु सपोर्ट सीपी एज वेल एज डेव. पीपल आर ऑलवेज फाइटिंग कि नहीं, कोई बंदा बोल देगा नहीं भाई तुम सीपी करो वही बेस्ट है, डेव बेकार होते हैं, फिर डेव वाले बोलेंगे नहीं सीपी वाले बेकार होते हैं. सो इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन bring all the people together, right? And they definitely would be people who are doing both of them. Now where would those राइट. people go? So this would be a platform where we will account for your CP contributions, or by CP contribution basically your CP growth, as well as your open source contribution or your development skills. So we are trying to combine that. That's why I'm saying CodeChef, Codeforce is lead code at Coder. This all comes from DSA CP part. On the other hand, we are talking about GitHub. So your open source contributions or the development skills would come from that part. That is clear? या And मतलब बता. आई मेंट टू से कि वो वाला डेटा पार्ट तो है ही अपने पास, है ना. मतलब वो हम्म तो रिफ्लेक्ट करेगी ही अपन प्रोफाइल में. हम्म हम्म अपना जो साइट है, दैट हम्म मतलब उसके प्रोफाइल में अपने साइट पे जो इंटरेक्शन है यूजर के, हम्म. उससे भी प्रोफाइल बिल्ड हो. दैट वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट. So that I already said, right? That okay. So जैसे someone is helping on Discord for yeah, I've 10 already 10 said that. questions, 15 I've questions, right? already said that. See, the Discord score would be a function of individual help to peers in both CP Yeah, and that's open source. that's So that's already there in this project. mhm. Right. That's better. That's the plan kit का है. मतलब there's a lot of hate. I don't know why. मतलब उतना deserve नहीं करता यार. Both are awesome things. If someone is doing CP or someone is doing the both of the things are awesome and people should appreciate that. Anyway, yeah, so that's the plan. Anything else, सूरज भाई बोलना है कुछ? Yeah, no, that's good. That's great. So this much is fine. We can always add things onto it, but this is the bare minimum I was talking about, right? If you think that this is too much, we need to break it down further, तो बता दो. If you think we can add something more, तब भी बता दो. Or if it's fine, then let me know. Looks good to everyone?
Yes. ओके ब्रोस. अच्छा, सेकंड थिंग यार, अगर तुम्हारे खुद के कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, इट्स योर क्लास वर्क, मे बी एग्जाम्स, प्लेसमेंट्स, जो भी होंगे, प्लीज़ टेक दैट प्रायोरिटी ओवर दिस. दिस इज़ नॉट अ प्रायोरिटी फॉर यू. दिस इज़ जस्ट अ प्रोजेक्ट टू गिव बैक टू द community or to make something scalable, something good where people can interact, right? So please don't take this as a priority and fuck other things up in your life. So this is not a priority per se. Okay, so that being said, so yeah, next let's choose the tech stack we are gonna use. So React तो हमने बोल दिया. अभी बोल रहा था next use करना है. क्या करना है बताओ? React. पहले ना फ्रंट एंड के लिए बोल देते हैं. नेक्स्ट इज नॉट बिगिनर फ्रेंडली. फ्रंट एंड भाई किसने करना है ये बता दो पहले. पोल ले लेते हैं एक. ठीक है. लेट मी जस्ट मेक अ वर्ड ऐप. जस्ट टेक नोट्स ओवर देयर. वर्ड. ओके, लेट्स जस्ट टेक नोट्स ओवर हियर. I'll edit it later. Tech stack to be followed. यार एक तो 4 स्पेस पे रखा है. 1 2 3. What the hell? 1 2 3 4. गया. फ्रंट एंड के लिए भाई क्या रिएक्ट ही करना है फिर? कोई और एडवाइस है किसी? 3 4 3 4. यार ये कितना वेird है वैसे. इसके कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है 4 स्पेस देने के लिए? बिकॉज माई टैब्स एक्चुअली गिव डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्पेस. आई डोंट नो व्हाई. And we won't have इतना सारा का Next.js advantage stuff. Will you be teaching development? No bro, I am not teaching development over here, but you can learn on your pace and try to contribute. Yeah, development is only learned by doing yourself, like maths. Okay, backend to Node.js and Mongo. हाँ भाई, plan तो यही है unless someone has some other suggestions. Supabase क्या है ये? Suraj bhai, treat us like a noob. So whenever you're saying something, just provide some context over here. A lot of people have left. Don't know why. Oh, okay. So Suraj, basically you are talking about only the storage part, or you want pub subs or something of that sorts from Firebase? Yeah, Supabase. What exactly do you want? Suba is basically a platform where we have all the authentication, storage, everything. Like AWS का छोटा सा version एकदम. Mm-hmm. But don't worry about that. What we'll rather do is that I do have a Azure account, so we can utilize that, right? So as to host it and stuff. But what I am saying is that Supabase use करने का कोई और advantage है हमारे पास. Authentication हम खुद कर सकते हैं, right? It's not a big deal. ऐसा तो है नहीं कि मतलब we are making a financial system and we need some other sort of authentication. So we would be able to code things from scratch, right? Hikaru, not really. Yeah, that would always be easier to join Discord and then to help. If person does not want to join Discord, so he would be able to make the contributions on the website itself, similar to Stack Overflow. That's the plan. All same, like ready. So is it React only or React with the white? What are we gonna go for? Okay, and what if some new help someone in the Discord? It's not like a notification, but we'll be syncing the things on periodic basis, so any new help would actually pop up.
React or are we gonna go with भाई रैंडम ने लाइक नहीं करना था क्वेश्चन था, वो आंसर करना था उसका. Guys, have you all, by the way, forked this? तो रिएक्ट एंड वाइट सेम चीज है, मतलब कि जैसा रिएक्ट जैसा वो बंद हो गया ना, उन्होंने अपना पूरा मतलब कोर बनाना बंद कर दिया है, वो नेक्स्ट जेएस पे शिफ्ट हो गया है. अगर हाँ. आप कोर रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो रिएक्ट प्लस वाइट यूज करते हैं आजकल. मतलब सारी फंक्शनलिटी रिएक्ट की सेम रहेगी, बस वाइट का थोड़ा सा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे जो वो होता है ना रेंडरिंग, काफी स्पीड काफी बढ़ गई है उससे. हाँ तो भाई वाइट बेसिकली रेंडरिंग स्पीड बढ़ा रहा है, बट इट्स नॉट सेम एज रिएक्ट, राइट? इट्स ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट. वाइट में तुम अलग चीजें भी यूज कर सकते हो ना, व्हेन यू इंस्टॉल टॉप वाइट. ऑफ रिएक्ट क्या कह रहे? मतलब प्लेन रिएक्ट के पूरा फ्रेमवर्क उसने नहीं बना दिया, जैसे नेक्स्ट जेएस ने हाँ. पूरा फ्रेमवर्क बना दिया, पूरा फ्रेमवर्क नहीं है वाइट, मतलब आप अपना अपना खुद इंस्टॉल कर सकते हैं जब चाहे तब. तो So रिएक्ट what प्लस are, वाइट ही लेके चलते हैं, क्योंकि रिएक्ट यूज नहीं करना है. okay, so correct me if I'm wrong, but what I understand is white is like on top of react, right? So we'll be installing white and उसके बेस पे already react install हो ही जाएगा. So in white we'll be selecting react, right? यस, वाइट उसमें तीन ऑप्शन देते हैं आपको, टाइपस्क्रिप्ट यूज करना है या फिर जावास्क्रिप्ट, सारे ऑप्शन आएंगे हाँ वो मोस्ट ऑफ द टाइम. तो we are gonna go with white, that's what you're saying, right? वाइट प्लस टाइपस्क्रिप्ट हम लोग जो यूज कर रहे थे. हाँ, white plus TypeScript. So anyone else who wants to go with React तो फिर opinion poll करा देते हैं. If no one is actually opinionated regarding React, then we'll go with white. Anyone? बोथ आर एग्जैक्टली सेम, देयर इज कुछ भी डिफरेंस नहीं है ब्रो, दोनों एकदम ही सेम है. रन भी एकदम सेम तरीके से करता है, बस हल्का सा डिफरेंस है रेंडरिंग में, और बाकी बैकएंड कोड लिखने में कोई से डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है. सारे पैकेज में इंस्टॉल होंगे, इसमें पैकेज सेम इंस्टॉल होंगे, Okay. कोड भी सेम ही लिख सकते हैं तब. अरे भाई इंडिया में थोड़ा डेमोक्रेसी तो फॉलो कर लेते हैं. जैसे लोग बोलेंगे वही करना पड़ेगा ना. React plus या white मुझे सर is same. ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, because रिएक्ट नहीं रिंग आ रहा है तो वाइट सेम ही एग्जैक्टली. Anything works. So okay, so we have 2 votes for React plus white. Okay, let's update it over here as well. Front end basically React plus white. Okay, that seems fine. Let's talk about back end. White कर लेते हैं. Cool. Or I should just write white over here, right? Okay, let's just write React plus white plus TS, just to make things more clear. Yep, got it, man. Okay. और ठीक है, बैकएंड के लिए क्या यूज़ करें? Node.js यूज़ करना है, राइट? Node यूज़ करना है प्लस TS यूज़ करना है. सॉरी, नॉट Node.js, Node TS. Okay, that seems fine. Are we using micro front ends, etc. in front end? Need Mongo no calls required. हिकाको भाई एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, आप क्या बोल रहे हो आप? हाँ सर, ये बोला था कि जो फ्रंट एंड साइड पे एक माइक्रो होता है ना, माइक्रो सर्विसेज होते हैं बैक एंड साइड पे. ये होते हैं माइक्रो फ्रंट एंड सर्विस जो उस पे होता है फ्रंट एंड साइड पे. तो मतलब कोई नेसेसरी नहीं है, अगर मतलब मैं बोल रहा था अगर थोड़ा और सीखना हुआ, क्योंकि मैंने वर्क नहीं किया उसके ऊपर. अरे अच्छी चीज़ तो है, कंट्रोल. सीखने के लिए आए हैं सब इधर. अच्छी चीज़ है, तू एक्स्ट्रा बता रहा है तो मतलब हाँ कुछ तो आइडिया है उसकी क्या? बात है तो हाँ सर कर सकते हैं. मतलब कुछ आइडिया है वैसे है क्या माइक्रो फ्रंट एंड्स? बिकॉज़ मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ. माइक्रो फ्रंट एंड बेसिकली वो है ना कि बेसिकली जैसे रिएक्ट होता है, उसमें कंपोनेंट्स होते थे ना, तो काफी सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बार बार फैच नहीं होते, उनको सेव रहता है, बस कंटेंट चेंज होता है डायनेमिकली. तो माइक्रो फ्रंट करता क्या है, कैश फॉर्मेट उसको यूज कर लेता है. बेसिकली आई फ्रेम्स जैसे कि अंदर का डाटा चेंज होगा, फ्रेम्स वैसे रहेंगे. हाँ बोल सकते हो, सही. इतना ज्यादा मुझे भी नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी को पता है तो भाई बता दो यार.
ठीक है, सो प्ररेक इज सेइंग मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बाद इंटीग्रेट कर देंगे एंड लेट्स नॉट डू इट फ्रॉम द स्टार्ट. आई थिंक दिस इज द राइट अप्रोच. हिकाको भाई, इफ यू हैव अदर ओपिनियन तो बता दो. So basically micro services are like Kafka and stuff. हम लोग जो बैकएंड में करेंगे ना, it will take every single call to the database, वहां से रिट्रीव होगा, हर एक चीज हम लोग डेटा बैकएंड पे No, जाएंगे, no, वो no, सब no, 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 करेंगे। no, no. So he's saying a different thing. I understand what microservices are, but what हम्म, Hikaku is saying is micro front ends. तो Microservices is something micro clear है। to me. Oh sorry, I misread it. भाई मैं 2 साल का FT हूँ, but I know what microservices are. I don't know about micro front ends, right? Even I don't do. I take my message back. Okay, cool. So ठीक है, but हिकाको भाई स्टार्टिंग से इम्प्लीमेंट करना है और डज इट मेक सेंस कि इसको बाद में इम्प्लीमेंट करें, जैसा तू बोला. मैं पूछ रहा था, मुझे खुद नहीं पता थी इसे। Then let's do one thing because no one over here is an expert, right? Let's try for a MVP. So प्रेरक ने Okay, okay. मतलब इस रिगार्ड में नहीं बोला, but I think his advice would actually fall over here as well. That let's not start with it. Let's make a MVP and then we can integrate it, right? So that ऐसा नहीं है कि कुछ फटने लग गया and फिर समझ ही नहीं आ रही क्या करना है. So at least we have something, right? हाँ सर, सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, cool. That makes sense. Okay, so Node plus TS is what we are going to use, right? And infra के लिए क्या यूज़ करना है आप? Node plus TS तो यूज़ होना ही है, right? But are we going to use Python as well? क्या बोलते हो? Anyone who wants to पाइथन use वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज करना पड़ेगा ना, वेब स्क्रैपिंग। scrapping ऐप वैसे हो तो मतलब TypeScript में भी जाएगी, उतना कोई सीन नहीं है. आई एम मोर कंफर्टेबल विद पाइथन, बट ऐसा कोई सीन नहीं कि पाइथन ही यूज़ करना है, तो यूज़ हम सिर्फ JS भी कर सकते हैं. माइक्रो फ्रंटेंड्स आर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच दैट ब्रेक्स डाउन अ लार्ज वेब. हेलो। हे, वापस आ गया आप. ओके, हाँ, खत्म मीट। वेल डन. कॉलेज की थी? क्या क्या हुआ? कॉलेज की मीट थी? अरे हाँ, कॉलेज की मतलब सोसाइटी के कुछ इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, तो उनको बहुत शर्म नहीं आ रही 11 बजे रात को मीट कर रहे हो? रात के ही रखते हैं सब कुछ, ओके, दिन में कहाँ कॉलेज हो जाता है। ये पढ़, नई चीज़ आई है मार्केट में, ये पढ़. माइक्रो क्या माइक्रो डेवलपमेंट अप्रोच दैट ब्रेक्स डाउन अ लार्ज. Oh, this is actually good, right? जस्ट लाइक हाँ, अच्छा ही है वैसे। एक कंपोनेंट साइट का कंपोनेंट बाद में इंटीग्रेट कर दिया। देखो माइक्रो सर्विस पता है ना, so this is actually almost similar to microservices just for the front end part. You have idea about microservices अभी? नहीं। अभी बोला मैंने, No. अभी नहीं बोला. एक तो क्या इंसान है तो. ओके, सो क्या होता है अभी, लाइक सॉरी, अभी क्या होता है, जैसे एक प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, राइट? उसमें 3 कंपोनेंट्स है, लेट्स से ABC. अब मैं सारे ABC को एक ही मान ले कोड बेस में डाल दूँ, ठीक है? तो उसकी वजह से वो हो जाए, जो इंटर प्रोसेस का मतलब जो प्रोसेस कम्युनिकेशन होते हैं वो कम हो जाएंगी. एक ही कोड बेस में सब कुछ चल रहा है, ठीक है? तो बट वो कोड बेस बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ रहा है? तो उसको मेंटेन करना भी उतना टफ हो जाता है. सो दैट्स कॉल्ड अ मोनोलिथ. नाउ द अदर वे इज कि मैं उनको सेपरेट कर दूँ तीनों कोड बेसिस को, दैट ये A डिकपल्ड है, B डिकपल्ड है, C डिकपल्ड है, एंड दे आर इंटरेक्टिंग ऑन बेस्ड ऑन रिमोट प्रोसीजर कॉल्स, RPCs, या फिर जैसे भी इंटरेक्ट करेंगे, बट दे आर एक्चुअली डिकपल्ड. So that is called microservices. So independently you can work on individual components without worrying कि you'll make a code change to, let's say, the component A and B would break. That would never ever happen because they are decoupled. So that's microservices. Now we are applying the same concept to the front end and we are calling it micro front ends. Does that make sense? ये बस वर्ड ही नया लग रहा है, क्योंकि मेरे काम तो पूरा रिएक्ट भी ऐसे ही करता ही है कि हम एक नहीं, नहीं, कंपोनेंट नहीं. अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं, पढ़ती वो यूज करता है वो। हाँ, तो अभी तुम कंपोनेंट्स यूज़ करते हो, ठीक है? तेरे को एग्जांपल दे रहा हूँ एक. तू बैकएंड बना रहा है, ठीक है? बैकएंड में तूने 3 क्लासेस बनाई है, 3 फंक्शंस बनाए, ठीक है? नाउ यू आर सेइंग कि डिफरेंट तूने फंक्शंस बना दिए. अब मैं देखो बोलूँगी को 3 अलग अलग कोड बेस में डाल दे, ये अलग अलग सर्वर्स पे अपने आप चलेंगे और इंटरेक्ट करेंगे विद सम RPCs में भी, ठीक है? मतलब वो एक सर्वर पे है नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे वो प्रोसेसेस के थ्रू. सो इफ़ यू डू दैट बिकम्स अ माइक्रो सर्विसेज, ताकि तू इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकता है या इंडिपेंडेंटली उसको ऑल्टर कर सकता है विदाउट वरिंग कि कुछ और टूटेगा. कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी यूजिंग रेस्ट वर्सेस gRPC. Bro, I don't think gRPC would be required. REST would work fine over here. Anyone has other
like other opinion on this? Hikaku bhai, why are you guys talking about gRPC? Because Flex is backend skills. नहीं, हिकाकू फ्लेक्स नहीं करता भाई, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है. हाँ हिकाकू भाई, हाँ सर, जीआरपीसी क्यों बता रहा था हाँ तू? जैसे अभी पढ़ रहा था आर्किटेक्चर, उसका तो वैसे काफी सही था वो. क्या मतलब? मैंने जो अभी मैं फिलहाल में सर जीआरपीसी पढ़ रहा था, हम्म. तो उसका कई सारे ना बेसिकली रेस्ट से काफी सही है. जैसे रेस्ट वगैरह के बाद में पोस्ट करते हैं ना सर, कोई रिक्वेस्ट वगैरह मारते हैं, तो उसका जो आर्किटेक्चर पैटर्न होता है कि एंड पॉइंट होता है, हम्म. फिर आईडी वगैरह होते हैं, ठीक है ना. हम्म. तो वो अगर आप उसको डालेंगे ना माइक्रो सर्विस वगैरह में, तो हम्म. वो बेसिकली काफी ज्यादा वो हो जाता है, मतलब टीएमसी मार्केट जैसे पैटर्न जाते हैं, तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, राउट को चेंज करना पड़ता है. तो जीआरपीसी ऐसा नहीं है, वो काफी फास्ट रहता है सर मार्केट जैसे पैटर्न में. और उसका अगर उसका बिहाइंड द पढ़ेंगे ना, तो वो यूज करता है सेगमेंटरी, काफी सही चीज है. तो ओके, आई गेट योर पॉइंट, तू क्या बोल रहा है, बट अगर हमें सिंपल बनानी हो कोई चीज़, ठीक है, तो हाँ सर, शुड वी रेस्ट ही यूज. मतलब बोल रहा हूँ, पूछ रहा था. हाँ हाँ, आई गॉट योर पॉइंट. एक काम कर सकता है, जितनी भी मतलब अभी तूने जीआरपीसी रेकमेंड कर दिया, राइट? लेट मी डू वन थिंग, ये जो भी तू चीज़ें बता रहा है ना, लेट्स कीप देम इन अ नोन लिस्ट, राइट? इसको लिख लेते हैं फीचर स्कोप में. टेस्ट gRPC, utilize micro frontends, micro services. ठीक है, और कुछ? Yeah, it is anonymous. So in this particular project it's not required, but when you're working with the real-time systems wherein you have billions of users, then it's not even a choice, you have to go with multiple servers. It's not a choice. Over here we won't have billions or even millions of customers, or maybe like we won't even have some 100k customers, so it's not required actually. Anywho, so I think these things have been figured out, right? Infra में python काट दूँ कि रखना है python, बताओ भाई. Anyone who wants python over here? What is infra? क्या कह रहे हैं? What is infra? That is Infrastructure. What is infra? ओके ओके. फ्रंट एंड बैक एंड तेरे को पता है, राइट? ठीक है. ठीक है. अब बैक एंड पे तो बिजनेस लॉजिक मेंटेन करेगा. अब मैं देखो बोलूँ कि बैक एंड पे भाई स्क्रैपिंग लगा दे, डाटा लेके आ, वो थोड़ी करेगा तू, मतलब टेक्निकली नहीं करना चाहिए ऐसे बैक एंड पे उसकी हम्म, चीज़ें, ठीक हम्म, है? तो दैट ऑल गोज इनटू इंफ्रा. तो बेसिकली व्हेन यू अंडरस्टैंड इंफ्रा, कहाँ गया, तो periodic refreshing of user handles to get updates on their latest achievements, serving the backend without doing calls for accessing. अब मान ले backend को कुछ डेटा चाहिए किसी यूज़र का, ना टेक्निकली बैकएंड शुड जस्ट आस्क इंफ्रा, भाई ये डाटा दे दो. नाउ इंफ्रा वो डिसाइड कि उसको कहीं जाना है कॉल करने या डेटाबेस में ऑलरेडी अवेलेबल है. सो दैट एंटायर हेडेक इज ऑफ इंफ्रा इटसेल्फ, ठीक है? फिर गैदरिंग यूजर डिटेल्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड सर्वर, पीरियोडिक एनालिसिस एंड अपडेशन ऑफ द इंटरनल डेटाबेस, ठीक है? समझ. ये सब इंफ्रा का काम. हाँ, यही कि इतने सारे डेवलपर्स है क्या सर्वर है? में. इतने सारे डेवलपर्स है सर्वर में. हाँ, अभी तो कुछ चले भी गए आई गेस. हाँ, A उस few टाइम people काफी went. थे. नहीं, a few people went dead. MongoDB क्या बोल रहा है भाई? या Firebase डेटाबेस के लिए. Mongo would be fine, I guess. You can use Firebase as well. You have to decide that, right? Let's put over in infra itself because infra चलेगा. मोंगो की फ्री वाली लिमिट है 500 MB. हाँ, तो लिमिट तो भाई Firebase पे भी है. Firebase की limit. फायरबेस पे है ना, एवरीथिंग विल बी डन इन बैकएंड का लैंग्वेज, और फायरबेस के डेटाबेस में वी कांट डू मच क्वेरी का चेंजेस, बट इन मोंगोडीबी देयर इज समथिंग कॉल्ड एग्रीगेशन, और हम लोग एग्रीगेशन में ही मोस्टली अपना आधा बैकएंड लॉजिक लिख देते हैं, और वो जब इम्प्लीमेंट होता है वो मोंगोडीबी के C++ के सर्वर पे रन होता है, जो बहुत ज्यादा फास्ट होता है. सो वी टेक ऑल, वी फेच, वी गेट ऑल द डेटा, और फिर उसके ऊपर क्वेरी करके उसके ऊपर कुछ लॉजिक लगा के हम लोग फिल्टर करके फ्रंट एंड पे भेजेंगे. ये मोंगोडीबी में हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस में ही फिल्टर करके लेंगे. सो बहुत ज्यादा, बहुत बहुत बड़ा गैप हो जाता है यूजिंग मोंगोडीबी एंड So समथिंग एल्स. two things over here. So the first thing is that I understand your point. We technically do have the, you know, the option of choosing anything we want. We can even go with SQLite. Yeah, there will be some problems with that. I do have alternatives to that as well. So let's not go in that fashion, right? So we can go with any database we want. So primarily you were talking about MongoDB and Firebase. Now the point you raised is very valid, that
Firebase के साथ there would be some things that like server would do automatically for us, but then a lot of restrictions would come in as well, right? That doesn't really gives me a good learning curve. So I think if you want to learn, MongoDB is the best. What do you guys say? MongoDB सही है, मेरे पास कोड भी रिटर्न है इसका। हाँ तेरे को किट का सो नहीं, अच्छा कोड है। हाँ सही है। Infra is between backend and database. I really won't say that. Yeah, infra का बहुत सारा काम होता है. One of these things can be you can ask say कि ठीक है backend और database के बीच में आता है. So it's not just limited to that. Okay. क्या करूँ इसका मैं? हाँ, क्या करूँ यूज कर लेंगे ये डायरेक्ट फाइल। लिटरली बस ऐड करना और वो यूजर नेम पासवर्ड और ChatGPT से ना 2 मिनट में बनवाऊंगा मैं ये, ठीक है? नहीं नहीं। Okay. Hikaru, are you here for your CV? Don't worry, it will look good actually on the CV. Okay. भाई तुम mongoose की जगह prisma यूज करेंगे ना? That what he means I guess. Prarik? Yes, हाँ. तो वही वो कह रहा है कि मतलब mongoose की जगह prisma नहीं यूज करने को बोल रहा है वो. He just got the hype. It's not good. That's what he's saying I guess. तो प्रिज्मा नहीं यूज नहीं कर देना। हाँ Prisma use नहीं कर रहा. That's what he's saying. Now Prarik is saying कि let's use Prisma. So we have a conflict over here. Let's decide that first. ऐसे बांट दो सब दो पार्ट्स में। 800 मेंबर ले जाओ दोनों. Okay, क्या ये? Okay, maturity, more mature, लेस जो features. ये बायस की लग रहा है मेरे को। More flexible, less flexible. Everything bad says is not always right. Everything any AI says is not always right. अबे तेरी तरह है Prisma देख. More opinionated, less flexible, less mature, बस fewer features. सही है भाई तो. है आपकी तरह है mongoose. Can be slower than ORMs. ठीक है. हाँ तो क्या यूज करना है? mongoose यूज करना है. Yep, mongoose. ये भाई प्रेरिक तू सपोर्ट कर रहा था. एक मिनट प्रेरिक तू सपोर्ट कर रहा, तू तो सपोर्ट कर रहा, तूने ये की पोस्ट कर दिया फिर. यू हैव टू टेक योर स्टैंस राइट. तू तो सपोर्ट कर रहा था प्रिज्मा को. व्हाई डिड यू पोस्ट दिस? डीएम में खरीद लिया सॉल्यूशंस का. कुड बी, आई डोंट नो. अरे वैसे भी है मतलब one thing I've learned over the past few weeks is that people are taking OpenAI or ChatGPT or Bard too very seriously, right? Too very seriously, don't do it. It'll mess you up. मैं सब कर रहे हैं, मेरे को पता सब ऐसे क्लिक किए जा रहे हैं किसने कर दिया. तो एनीवे क्या करना है भाई? प्रेक भाई बताओ फिर. Yeah, Hikaru, it's done. We're just trying to finalize that whether we are going to use MongoDB or we're going to use Prisma. Okay, let's just I'll post. Let's just react to that. Should we use MongoDB or Prisma? 1 for Mongo and 2 for Prisma. भाई रिएक्ट करना है इस पे सारे. हाँ रुक जा. बाकी लोग कुछ बोल भी नहीं रहे, कुछ लिख भी नहीं रहे. आधे वन लाइव इन द चैट. ये क्या हरकत है? मैं हटाया इसको. कोई भी नहीं ऐड टू सब मंगो. भाई प्रेरक तूने खुद मंगो को वोट किया. उसने वोट ही नहीं किया अभी तक. प्रेरक ऑब्जर्वर बना हुआ है. प्रेरक ने ये ओके भाई वाला लिखा है.
ओके ओके, वैसे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, mongoose लिखना चाहिए था यहाँ पे, बट ओके कूल, व्हाटएवर इट इज, मेक द साइट वर्क फॉर मी। भाई पर प्रॉब्लम ये है ना, साइट चलने लग जाएगी, फिर किस पे चलेगी ये तो पता होना चाहिए ना। चला तो किसी पे भी थी, बाद में चेंज कर रहे हैं बैठ के, नहीं भाई ये यूज़ नहीं करना था, देख लेंगे। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है भाई, तो द ओनली रिक्वेस्ट इज दैट द कोर रिक्वेस्ट इज दैट एवरीवनस गोना लर्न। इट्स नॉट अ डेडलाइन बेस्ड प्रोजेक्ट कि 2 दिन में करना है, 2 हफ्ते 2 महीने में करना है। इट्स नॉट अ डेडलाइन बेस्ड प्रोजेक्ट। Exactly, bro. Thanks, bro. Okay, so it's not a deadline based project, but I just expect you guys to make PRs that have least code possible so that others can understand it as well. If anyone feels stuck a bit, then try to help him if you already have faced similar doubts, or if you think that you are good in that particular tech stack, right? And yeah, just let's help everyone grow in this field. ठीक है, आई थिंक वी हैव बीन एबल टू डू क्वाइट अ गुड जॉब इन DSA-CP, right? I have seen personally, I have seen people grow, like people were stuck for quite a long time in some range and they were able to grow because of this server. So I really want that we should do the same for dev as well. It's definitely a new field for me, but maybe like a couple of years ago even DSA was new for me. So everything comes with practice and time, so I think this won't be exception also. Yeah, that's it. So I think this is fine now. I'm gonna confirm this. Preview looks fine to me, I guess. Okay, and I am on the. I'll just. Okay, I'll anyway edit it through my other account. I hope you guys have actually taken a fork of this. क्या लिंक भेजो लिंक। स्टार तो कर दो, एक स्टार है वो भी मेरा खुद का है। ठीक है, फॉर्क 2 लोगों ने कर दिया, स्टार एक ने किया है। वेल डन। ये रहोगे चार्ज देखो। कूल ब्रेक। सो हाँ ठीक है, इफ़ यू वांट टू देन यू कैन सी, इफ़ यू हैव द टाइम, इफ़ यू वांट टू यू कैन। आई डू हैव अ आइडिया जो काफ़ी पहले से चला हुआ था मेरे दिमाग में। इफ़ यू वांट तो यू कैन, एंड we can discuss the design as well if you want, but they you can start on the front end obviously for the app, but you won't be able to integrate the APIs etc, but your front end can be done before that. If you want we can get started on that front as well. Do you want that, Prirak bhai? कूल है, हाँ ठीक है, तब तक थोड़ी स्टेबिलिटी भी दिख जाएगी कौन कैसे कितना काम कर रहा है। दैट्स अ गुड आइडिया। एंड यू गोना यूज फ्लटर, राइट? Okay, cool. Anything else, or we shall end this meet right over here? I'll just add over here. Meet में वगैरह ठीक है। Discussion for the mobile application. I know it's not the right area to add it, but anyway. Okay. Filter waste. Free web by Prerak. I think that makes sense. ठीक है, cool. Ending the meet now. Are we doing Figma वाला काम या direct start? I don't know, to be honest. Like, we can start directly, but yeah, then there would be a lot of repetitions that someone would do something and then we're gonna ask him to change it. Let's do one thing. For one day, let's come up with different ideas, right? Whoever is good at front end, let's come up with different ideas. I also will try to come up with it, right? And then we'll finalize on some idea or on some design pattern. Would that make sense? Restaurant CRUD वाला काम मैं कर लूँगा, interactions वाला काम और the high level design, low level design, that is something I'll help with. But this Figma wala part, front end wala part or designing wala part, who thinks he's good at?
Suraj, you're good at it? हाँ, कौन बोला भाई? मैं क्या तू बनाएगा? क्या क्या हुआ क्या, मैं सो गया था। तू निकल ले, पिटेगा तू मेरे से अब। क्या कुछ मिस किया क्या मैं? अरे मतलब फ्रंट एंड डिजाइन करना है, करेगा फिग्मा? हम्म, फिर ना ना मेरे से नहीं आता। ओके। देखो यार, जो काम कोई नहीं करेगा वो मेरे को तो करना ही पड़ेगा। तो if anyone wants to jump in then he can, if no one's jumping in then I'll do it. सूरज कर रहा ना, सूरज ने चैट में लिखा तो आई विल रियली स्मूथ। अच्छा, ओ ठीक है सूरज, great, awesome. Sorry, I didn't realize that you were saying in this fashion. So yeah, you can do it. You can come up with a design and we all will try to make it even better. I'm sure that you'll make the perfect design, but if there's any scope of improvement, we'll try our level best to help you with that. Figma, paper, pen, कुछ भी, but skeleton रहेगा तो everyone can work together, वरना सबके अलग opinions will look अलग. Cool. So today what I'll do is I'll just make the basic projects. हाँ, npm init npm run start, that is something I'll do. ठीक है, and then you can again fork it and proceed ahead. I hope that makes sense to everyone and everyone's on the same page. Anything else remains? दोनों करने, दोनों करो. For the people who are interested for the project, I can take the basic dev design. Okay, basic dev session. Yeah, that will be great actually. Correct. So you can take it. Maybe tomorrow if you're fine with it. Just decide a time on this particular chat itself. You can go through the basic fundamentals of White, React, just the very basics, right? So people can at least get started. So that much if you can cover, that would be great. And you can actually decide the time. भाई एक बात बताओ पहले, ये किसने बनाया था? ये कहाँ गया? अरे कहाँ चला गया भाई? हाँ, ये डिस्कशन रूम किसने बनाया है? क्रिएटर कौन है इसका? तू है क्या? अबे नहीं मैं नहीं हूँ। या तो तू होगा या पायरेट किंग होगा। भाई मेरे को परमिशन नहीं दी बोलने की, कौन बोलेगा इधर? आई डोंट हैव द परमिशन टू स्पीक ओवर हियर। अब मैं बैठ के गूंगा बैठा हूँ इधर, मतलब भाई कुछ तो ढंग के काम कर लो। तो पता नहीं सर, कर देता हूँ इसको। कोई नहीं को तो बुला लेंगे वापस, बट ठीक है। तो इधर एक मैं लिख देता हूँ, क्या नाम है उसका, सेशन was the very basics slash fundamentals basic frameworks. So we are gonna use basic TypeScript fundamentals as well. People don't feel overwhelmed. Okay. Prereq, so you can decide the time and you can proceed ahead. But कोई बता दो friend. Okay, so see if someone can help differentiate. So yeah, so see, Hikaru, TS or TypeScript is actually the language that we are going to use. Node.js or React.js are basically the frameworks. Now people call React.js to be a library and some people call it a framework, but let's stick to framework itself. So React.js is a framework, Node.js is another framework which helps you to, which actually provides you a proper workflow for things. It provides you with a lot of pre-written code and stuff, right? So if you want to understand in that fashion, then these are two frameworks, and TypeScript is going to be the language that you're going to use in both of these frameworks. Cool. Hikaru, that answers? Okay, so TS is like a superset of JS. JavaScript is a language. TypeScript is also a language. TypeScript encompasses this JavaScript. Cool.
भाई वो जारकम मत मार, वो बंदा ऑलरेडी जेएस और टीएस में कंफ्यूज है, सीएसएस और साथ से और कंफ्यूज हो जाएगा. I think most of the people know TS and JS, but only a small quantity of people might know about CSS and SAS. At least मुझे भी नहीं पता कुछ हफ्तों या महीना पहले तो. Okay, so if I say I want to go with backend, then I should learn what? Okay, so you can start with Node.js, or you can actually start with TypeScript, right? And then you can learn Node.js. Front end is the part where the reason. अरे anonymous was a doubt different था यार. He was asking something different. यार बंद कर दूँ पहले रिकॉर्डिंग, कब से रिकॉर्डिंग चली हुई है.